कार्बन स्टील को बाकी प्लेयर्स से क्या अलग बनाता है? मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली योर मोट इन दिस बिजनेस? जहाँ पीईबी खत्म होता है वहीं से कार्बन शुरू होती है। हम हैवी स्ट्रक्चर्स के एक्सपर्ट्स हैं। पीईबी सिंगल मॉड्यूल या कंपोनेंट बोलते हैं हम जिसको, वो एक सिंगल कंपोनेंट हमारा मतलब अप टू 40 टन रहता है, जो कि बहुत कम फैक्ट्रीज है जो हैंडल कर पाती है। ऑल्सो वन मोर यूनिकनेस दैट वी हैव इज ईच प्रोडक्ट इज कस्टम मेड टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट. The bullet train bridge is what we are discussing right now. That is going to have trains traveling at speed of 350 kilometers an hour. So that is the design parameters. So you can imagine the vibration and the speed with which trains are traveling on it. So the bridges were designed with the help of the Japanese principle. They taught us entirely new method of fabrication, entirely new method of handling the material, also welding technologies. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर श्रेनिक जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है कार्बन स्टील के। दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 19 years in operation of the steel structures and heavy steel structures which is made for the infrastructure solutions. So please welcome Shrenik ji. Sudarshan ji, thank you for having us on Beat the Street. थैंक यू सर फॉर योर गिविंग अस टाइम। सो आज इस वीडियो का हमारा पर्पस है टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल बिजनेस ऑफ कार्बन स्टील एज वेल एज द इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट्स इनटू. इट इज अ वेरी क्रिटिकल नेचर ऑफ एन इंडस्ट्री बिकॉज what exactly they do, they provide steel structural solutions for the infrastructure projects, okay, like bridges, like roadways, highways, railways. So they operate into this segment, okay. So शिनिक जी, आप मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपने 2011 में कंपनी को एस्टैब्लिश किया, ओके. सो व्हाट इज योर जर्नी सिंस लास्ट 15 years and how you got into this idea, and please tell us about the journey. So Sudarshan ji, our journey does not start from 2011. I belong to a steel family. Okay. So हम लोग 1980 से steel business में है. My father was doing shipbreaking. Thereafter, we were importing a lot of steel into India. Okay. And from that, that's when I joined the family business and learned the trade for steel. And that's how we came in touch with so many engineer customers that taught us what we are doing today. They help us first, do basic cut to size steel as per drawing. Then they taught us how to do some basic conversion in steel. Then we got into contract manufacturing. And that's how we branched into 2011 into carbon steel, where we were exclusively serving to engineering clients across India. We had customers all the way from Isjak, Yamunanagar down to BCG Energy Chennai. Okay. So we got decent exposure from that entity, and carbon steel was then focusing on only providing a direct, end to use steel and fabrication to our clients. So we put up our first workshop in Khopoli in 2014, and then of course we expanded further into Gujarat in 2017. So that has been the journey so far, and we have had decent clients and order book. Okay. Thank you for explaining. So I like the idea of your entrepreneurial journey, जहाँ पे आपने आपके स्टील इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को कंबाइन किया विद द इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, which are very few players able to do it, because lot of steel companies are able to just provide the basic solution, but you bring in an engineering flavor to the business. Right. So सर, आपका बिजनेस जिस तरीके से व्हेन आई सेड कि इंजीनियरिंग है, तो थोड़ा इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है. सो प्लीज टेल अस, आप किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या क्या आपके मेजर सेगमेंट्स हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को समझ आए कि एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस प्रोवाइड द सर्विस टू. So yeah, today we are fortunate to serve a number of industries. For example, we do a lot of jobs for steel plants. We make buildings for chemical plants. We are doing a lot of work for refineries across India, all the way from Assam and even near home in BPCL.
HPCL Mahul. We have worked in IOCL Dumad, Paradeep, Bathinda. So yeah, so refinery has traditionally been our sector, but now we are seeing newer sectors in infrastructure, and also we are doing a lot of high rises, data centers. So those are the exciting areas where we are working in. So broadly if we look at it, जो हमारा प्रोडक्ट बोलते हैं, तो प्रोडक्ट में एक हम लोग का नीश है, हम हैवी स्ट्रक्चर्स पे कंसंट्रेट करते हैं. तो हैवी स्ट्रक्चर में ऐसा है कि जो भी सिंगल मॉड्यूल या कंपोनेंट बोलते हैं हम जिसको, वो एक सिंगल कंपोनेंट हमारा मतलब अप टू 40 टन रहता है, जो कि बहुत कम फैक्ट्रीज है जो हैंडल कर पाती है. तो हम लोग का जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो हैवी स्ट्रक्चर्स में है. टिपिकली 5 मीटर वाइड और इवन 108 meters long structures we have made in our unit. We are able to assemble the entire structures at our workshop for client satisfaction if the need arises. जैसे कि हमने बुलेट ट्रेन के 2 ब्रिज है वो पूरे पूरे इरेक्ट किए थे हमारे वर्कशॉप पे. तो दिस काइंड ऑफ हैवी work we are able to do with lot of ease. And also one more uniqueness that we have is each product is custom made to client requirement. तो हर चीज़ हम लोग स्क्रैच से उसको प्लान करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट उसको बनाया जाता है. तो हमारा हर कंपोनेंट अगले कंपोनेंट से अलग होगा, हर बिल्डिंग अगले बिल्डिंग से अलग होगी. फिर भी वो एवरी टाइम इज फॉर अस दैट चैलेंज, यू नो, वी आर taking up and doing the best we can for our clients. Okay. So जैसे कि आप बता रहे थे कि आप स्टील स्ट्रक्चर्स सॉल्यूशंस देते हैं. इट इज आई थिंक वेरी अ प्रिसीजन नेचर ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे मेजरमेंट इज अ वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस. ओके, आप एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल या जनरलाइज एग्जांपल बताइए कि that is what you call a heavy steel structure. I think when the train passes from a lake or something, the bridge we see, that is what you exactly talk about, right? So the bridge, the bullet train bridge, what we are discussing right now, that is going to have trains traveling at speed of 350 kilometers an hour. So that is a design parameter. So you can imagine the vibration and the speed with which trains are traveling on it. So the bridges were designed with the help of the Japanese principle. They taught us entirely new method of fabrication, entirely new method of handling the material, also welding technologies, so much so that RDSO had a workshop in the Carbon facility to train their own engineers as well. So and the precision that we are talking about, the tolerance was lower than 6 mm. We achieved it under 2 mm. And it had about 3.5 lakh holes जो एकदम मैच होने चाहिए, वरना the bolt will not pass through it. That was matched, and that is a kind of precision जो हम achieve करते हैं. So I just wanted to add, जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, I told you heavy structures we do. एक हमारा प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर जिसको हम प्रिसीजन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो मशीनरी और लाइव प्रोसेस के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर रहता है सराउंडिंग इट, विच इज इंटरेक्टिंग विद लाइव प्रोसेस, उसमें भी बहुत प्रिसीजन रहता है. दैट ऑल्सो दैट ऑलमोस्ट हैज 0 और लेस देन 1 mm टॉलरेंस. उस टाइप का भी स्ट्रक्चर्स हम सक्सेसफुली करते हैं. ऑफ कोर्स ब्रिजेस की अपन ने बात की. On that basis we got our RDSO certification last year. तो अभी हम नॉर्मल रेलवेज का भी काम कर सकते हैं. एंड फाइनली, ऑल्दो इट इज नॉट आवर थ्रस्ट सेक्टर, हम ज़्यादा काम नहीं करते, बट PEB is the easiest product that we do in our portfolio. Okay, right. So हम एक बार आपके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है उसके बारे में जैसे आपने बताया, तो थोड़ा आप बताइए कि अभी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट से आता है, एंड जस्ट अ प्रोडक्ट बाइफर्केशन फॉर द रेवेन्यू, हाउ यू डिराइव द रेवेन्यू. सो हम लोग का मेजर जो प्रोडक्ट है वो हैवी स्ट्रक्चर्स है, एंड लकीली एक नीश भी है, बट इट हैज लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इट. इनफैक्ट हम लोग का मेजर रेवेन्यू आज भी उसी से आता है, एंड दैट इज अवर मेन डिफरेंशिएटर. मैंने जैसे बताया, हम 40 टन के कंपोनेंट्स इजीली हैंडल कर लेते हैं.
तो वो हर कोई कर नहीं पाता है। इवन बुलेट ट्रेन के लिए इंडिया में सिर्फ 2 या 3 वर्कशॉप क्वालिफाई हुए थे, उसमें से ओके कार्बन है। ओके तो वी 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 कंसिडर आवर सेल्फ एक्सपर्ट्स इन दैट। तो स्टील प्लांट्स के लिए ब्लास्ट फर्नेस हो गई, स्मेल्टर शॉप्स हो गए, पाइप रैक हो गए, या हैवी यूटिलिटी बिल्डिंग्स हो गए, क्रेन गडर्स हो गए, ये सब में इतना लोड आता है, लोड बेरिंग मेंबर्स रहते हैं कि टिपिकल स्टील प्लांट में जब स्टील को रोल किया जाता है तो ब्लास्ट फर्नेस या स्मेल्टर शॉप में 300-400 टन का लोड वो बिल्डिंग के ऊपर आता है, जो कि हम इजीली अपने डिजाइन और एक्सपर्टीज से हैंडल कर लेते हैं। got it so just for the investors, company derives लगभग 68% of the revenue from the heavy steel structures। वहीं पे जो प्रिसीजन या टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है उनसे करीबन 27% आता है। स्टील ब्रिजेस स्ट्रक्चर से लगभग 3 to 4% रेवेन्यू आता है। देन देयर इज अ पीबी एंड अदर रेवेन्यू विच समवेयर क्लोज टू 2 to 1-2% से इनका रेवेन्यू आता है। सर जैसे कि आपने बताया बुलेट ट्रेन द प्रोजेक्ट यू डिड, कैन यू टेल अस मोर प्रोजेक्ट्स यू have done till now? So we have done a lot of expansion for ArcelorMittal. He is also a major client for us. India is one of leading or the leading engineering company, is also a big partner with us, and we are closely doing a lot of work for them. Tata Projects is another big client. Then John Cockrell India Limited is also our client. Okay. Then Panametrics, which is a Baker U associate company, is also our client. Other than that, of course, there are many clients. Some of them we are not able to name because of regulatory reasons. Yes. But clientele we have across India, and of course the refineries I mentioned. We have worked with almost number of refineries and clients, and both EPC clients. करेक्ट आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक चेन्नई मेट्रो बुलेट ट्रेन हो गए, जंक्शन हाउस प्रोजेक्ट, आरती गोल्ड, सो थोड़ा उनके बारे में बताइए किस कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप लोग ने काम किया है, बिकॉज यू हैव इवन वर्क फॉर द ग्रासिम एज वेल एंड एलएनटी के साथ भी आपने काम किया है। सो ब्रॉडली अगर हम स्पेस से बात करें तो जैसे इंफ्रा हो गया, तो इंफ्रा में हमने लिफ्टिंग मैकेनिज्म बनाया था अटल सेतु ब्रिज के लिए। फिर वाशी ब्रिज के लिए हमने फोम ट्रैवलर्स बनाए हैं, ऑल्सो लिफ्टिंग मैकेनिज्म फॉर द ब्रिज। देन चेन्नई मेट्रो के लिए हमने फोम वर्क किया है। हमने फोम वर्क किया है बुलेट ट्रेन लाइन के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स द बुलेट ट्रेन इटसेल्फ। रिसेंटली हम लोगों को और 2 ब्रिजेस अवार्ड हुए हैं। एक उमरगांव में है और एक वापी में है। सो दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। रिफाइनरी में मैंने आपको बताया हमने IOCL की कई साइट्स पे काम किया है, ऑयल इंडिया, HPCL, BPCL, HRRL, HMEL। तो ये सेक्टर्स में हम लोग ने आइदर डायरेक्टली और थ्रू आवर EPC क्लाइंट्स वी हैव वर्क। एंड बिसाइड्स दैट अगर केमिकल सेक्टर्स की बात करें तो हमने आरती में स्ट्रक्चरल पाइपिंग वर्क दोनों किया है। उसके अलावा हमने ग्रासिम के साथ काम किया है, RSPL के साथ भी काम किया है। तो सेक्टर वाइज काफ़ी क्लाइंटल है। एंड डेटा सेंटर्स और हाई राइजेस की बात करें तो हमने आइकिया बैंगलोर का बिल्डिंग बनाया है टू सम एक्सटेंट। एंड देन वी हैव ऑल्सो डन फिनिक्स टावर्स का कॉलम्स, दैट वाज इन हैदराबाद। कंट्रोल एज डेटा सेंटर्स के लिए हमने चिलर प्लेटफॉर्म्स, DG प्लेटफॉर्म्स और उनका एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया है। एंड अमेजोन के लिए भी काम किया है थ्रू स्टर्लिंग विल्सन। सो या सेक्टर वाइज देयर आर होस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड इट इज एक्साइटिंग टाइम। स्मार्ट सिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉइज फ्री, पोल्यूशन फ्री डेवलपमेंट करना है तो I think steel is a preferred choice today, and we are lucky that we are in that space where we are able to give so many solutions wherever you can think of building something। आप स्टील से कुछ भी बनाना चाहते हो तो वो हम बना के दे सकते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट कंपनी डज इज एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ जब हमें स्टील स्ट्रक्चर्स का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज वेयर द कार्बन स्टील कम्स इनटू। ओके, आई थिंक जापान एंड जापानीज को
इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट माना जाता है. जी And बिल्कुल. you have been lucky enough that you are able to bring them to your workshops and Yeah. train your team and build that kind of expertise. So probably that is a major breakthrough for your company. Yes, Yes. absolutely. Can you sir tell us ki, what differentiates you from your competitors which operates into all these, because the segments you operate into have multiple competitors. Okay. So आपका क्या exactly मोट है जो आपको differentiate करता है बाकी सब प्लेयर से. See, I would like to highlight 2 or 3 reasons. हम्म. एक तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग 40 टन्स के कंपोनेंट इजीली हैंडल हम्म. कर सकते हैं. हम्म. सेकेंडली, हम हर कस्टम इंजीनियरिंग को इजीली एग्जीक्यूट कर चुके हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इन द पास्ट. बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर्स हैव अ बिग ट्रस्ट ऑन अस, हम्म. और वो हमको बहुत सारे रिपीट ऑर्डर्स देते हैं. इनफैक्ट दिस ईयर आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट 90% प्लस हम्म. रिपीट ऑर्डर बुक है. ओके. एंड अदर देन दैट हम लोग जो टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत टफ टाइमलाइंस में होते हैं. हम्म. तो हम लोग जिस वॉल्यूम्स पे कस्टम फैब्रिकेशन करके देते हैं, that is quite an achievement in itself. Okay. Because you have to understand that every product has to be understood and made from scratch. So it is a feat in itself. ओके. गॉट इट, गॉट इट. हम एक बार आपकी वैल्यू चेन को समझे, लाइक हाउ यू प्रोक्योर योर मटेरियल्स Right. and how you build into the workshop, and then there is a part of installation. So just explain the value chain, like how you procure and Yeah, so everything. usually हमारे जो भी सप्लायर्स है वो मेन प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि JSW हो गया, सेल हो गया, JSPL हो गया, आर्सिलर मित्तल हो गए. So those are our main suppliers. And usually once we get an order, we place a back-to-back order with financial arrangement to these players. They supply the steel in about 4 to 6 weeks. Ideally around 90 days is depends on the project, to be honest, but on an average basis I would say it would be 90 days. If it is a more complex or a more technical project, it could have a slightly longer cycle. And then post dispatch component wise, we do get payments. We don't have to wait for the entire building to be delivered. Okay, so milestone based payment रहता है. Dispatch based. Yeah, dispatch based. Okay. हाँ, component wise. Okay. Okay. So that is how the cycle is designed. And then you also do the installation work at the site. No, so we are not currently doing installation Okay. work. Yeah. We provide supervision in case the client requires, since it is our product. Yes. 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 A lot of times there is a request that you deploy a couple of engineers or a small team to help us do the erection. So we do that as well. Okay. But we do the assembly at our workshop. If the client wants to see the entire structure assembled in one piece to see that it is absolutely as per their specs and design, we do that for them. Okay. At our workshop, yes. I think the quality also places a very big role in building your moat for the business. Because जिस तरीके के ये strategic natures of structures हैं, इसमें काफी ज़्यादा audits and quality checks भी आपकी workshop पे होते होंगे, and that is why you got an RDSO certification also. So just wanted to understand about your expansion plan, because one of your facility also operates for more than 90% of the capacity utilization. Right. Correct. So आपके क्या expansion plans हैं, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए. Right. I'll start with the quality part first because that excites us. See, हम लोग जिस लेवल के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिस टनेजेस और मार्की स्लैश मेगा प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे टनेजेस एंड वॉल्यूम्स आर इन्वॉल्व. सो कार्बन का इतना कंट्रीब्यूशन रहता है, द क्लाइंट प्रीफर्स टू हैव अ रेसिडेंट ऑफिस इन आवर वर्कशॉप. Okay. And the entire inspection team is actually interwoven into the production process. So every step, which could be cutting, or in fact we can start from receipt of material, then cutting, then fit up, then welding. Each stage is also countersigned by the clients. So this process makes sure कि हम लोग का जो final product है उसमें
deviation ना हो, and it is right the first time. So that is our motto. And clearly this approach, has encouraged, like I said, to get a lot of repeat orders. So yes, the utilization is quite high. अभी हम लोग उमरगांव में ऑलमोस्ट 95% कैपेसिटी पे चल रहे हैं. So we clearly need, of course, more space in order to get a bigger pie of the order book. तो हम लोग उसी पे अभी जो IPO प्रोसेस है उसमें ही 2 प्लांट बिल्ड करे. वी हैव द स्पेस, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू पुट इट इन प्लेस. 20 एकर्स का प्लॉट है. उसमें से इवन आफ्टर दिस एक्सपेंशन almost half is still balanced to further expand. Okay. So we are looking forward कि ये expansion करके हम better करें अपना participation, because the requirement is much higher than what we are catering today. करेक्ट. कितना कैपेसिटी आप लोग एक्सपैंड कर रहे हैं करंट कैपेसिटी से? एंड आई थिंक यू मेंशन्ड, आई हैव सीन इन योर आरएचपी दैट दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी विल बी more focused towards building the providing the solutions for the railways. Right. So please tell us. अभी जो एक्सपेंशन हमने प्लान किया है वो उमरगांव फैसिलिटी के लिए किया है. It is currently producing 30,000 tons, and 6,000 we are doing in Khopoli. Post expansion, the Umargaon facility will produce 42,000 tons annually, and 6,000 from Khopoli. So it will take the overall to 48,000 tons. उसमें से we have planned 2 buildings. One of them is for the railways. Okay. जो हम लोगों को RDS अप्रूवल मिला है in the last 2 years effort. We are now qualified for open web girder bridges, FOB, ROB, bow bridges. So we are making a specific facility that caters to railway requirements. तो वहाँ पे हम डेडिकेटेड रेलवे प्रोडक्ट्स बनाएंगे. और जो सेकंड है वो हमारा जो एग्जिस्टिंग डिमांड सप्लाई गैप है उसको फुलफिल करने के लिए रहेगा. बट वो दैट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट building in our existing set of buildings. The idea is to bring out the best efficiency in terms of production process, use of shop floor, and bring about more efficiencies with some automation as well. So we are planning that the raw material will go from one end, and the other end we will get our finished product ready to be delivered to the client. That is the overall plan, and it should bring about the capacity enhancement that we just discussed. Okay. So you are spending somewhere close to 12 crores for this capacity expansion. Correct. What could be the revenue potential when this capacity will be commencing, and Right. just if you can So this would bring about boost our revenues by 6 to 7 times of the Capex. Okay. So your fixed asset turnover is somewhere close to 6 to 7 for the every rupee you spend. Yes. That is the revenue potential. Yes, that तो is ये correct. कैपेसिटी लगभग कब तक ऑप्टिमम कब लाइव होने वाला है? Your plan is to. So our based on the timelines that we are looking at today, around February of next year, we should be able to put up both the plants that we are talking about. Yes. Correct. And the land which is despite this expansion will be available, तो उसमें लगभग हम कितना कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे? Like from 48,000 tons we will be able to scale it to what levels? See, our ultimate aim is to produce just from Umargaon around monthly 6 to 7,000 tons. Okay. So phase 2 we will try to utilize about half the land is still available to develop. Okay. So we will try to bring that phase after we finish the one that we are planning currently. And that would entail some Capex, of course, but obviously. will be in the subsequent years. Okay. So लगभग 48,000 से हम इस कैपेसिटी को करीबन 72,000 मेट्रिक टन्स पे ये चला जाएगा. ओके. सो सर थोड़े फिनेंशियल्स के बारे में आप बताइए. इफ यू लाइक 3 years ऑफ में आपकी रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी क्या रही है? कैसे आपके मार्जिन्स एंड पैट के नंबर्स
जी. So we have been in a very high growth path. करेक्ट. हम लोग का 2 साल पहले अराउंड 150 करोड़ रेवेन्यू था. टुडे वी आर सिटिंग एट 272 ओके. and we are still on that say similar growth trajectory from the numbers so far and the order book. ओके. So that's a good thing that we have going for ourselves. उसके अलावा as far as EBITDAs are concerned, average EBITDA is around 13 to 15%, which we are likely to improve based on financials as far as interest costs are concerned. We'll also get some benefit of fixed expenses marginalizing over higher करेक्ट. productions, and also the product mix. We are focusing now on products that are having better bottom line, specifically in railways and technological structures. We are also actually developing some products for railways and defense now, which requires these modules, assemblies, and frames, which are similar technology terms in what we already do. So we are trying to, or we have already signed some non-disclosures, and we are going to make prototypes for those areas as well. So by 28, hopefully we'll see some products coming out of carbon that will also help our financials. So just to let you know about the PAT levels, it's currently at 14, and we are likely to, of course, keep we can factor these savings and see immediate benefits in the near term and the long term plans that I करेक्ट. discussed. Yes. सो सर, आपकी ऑर्डर बुक के बारे में थोड़ा बताइए कि लगभग आज की तारीख में आपकी कितनी ऑर्डर बुक है, एंड इफ यू कैन जस्ट गिव अस द नंबर अबाउट द bidding pipeline you currently have, so Correct. and what is the timeline of the execution of that order book generally, Right. average timeline, so just please. So about 330 crore order book we have, out of which around 200 to 230 will be executed within this year. Okay. This is barring the figure that we have already done Okay. so far. Okay. So that is the so far as the order book is concerned. And at any point of time, we are bidding for about 10 to 15,000 tons. We are bidding for a few bridges as well. There is some export job also in the pipeline. So yeah, a lot of avenues and Correct. but about like I said, from the current order book, about 100 crores will be spilled over to the next year. Okay. And based on those timelines, we are taking further order books as well. आपकी बिडिंग पाइपलाइन जो आपने बताया 10,000 मेट्रिक टन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नंबर्स, क्या लगभग बिडिंग It's about पाइपलाइन 100 साइज? to 150. ओके. 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 Our average order size is around 5,000 tons, which is roughly 50 crores. So I'm talking about two or three orders Correct. that we are in advanced stages of discussion. Yes. I'm also reading about your company and find that you are able to maintain your ROCE levels, and you are also now plan to repay certain debt. So if you can just tell us what exactly is Yeah, your... our ROC level I think is at a healthy 26, 27%. Correct. Correct. And one of the we are retiring a small loan of about 3 crores from the proceeds. Okay. And other than that, we are going to out of our own self accruals, or whatever interest bearing funds which are slightly on the higher side, will be able to easily retire. So that is a benefit that we were talking about. Okay. Okay. And it should directly show in our PAT margins. Yes. I think one of the interesting things I was reading about uh, in your particular industry, the two listed players came together to do the JV. There is a one leading PEB player and a steel player came together to do a JV for the heavy steel structure Right. project. So, can you tell कि ये इंडस्ट्री इतनी जिसका कंपटीशन है इतना हाई है दैट दिस इज द समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन दिस स्पेस, मोर अबाउट इट लाइक.
Yeah, so that's a good thing, right? So Hmm. we are in this industry and Hmm. specializing in heavy fabrication Hmm. since almost now 8 to 9 years. Correct. So you can imagine two big players also Hmm. wanting to enter. Hmm. Hmm. So the PEB space we see is already saturated Okay. to some extent, and I Hmm. think they want to enter our sectors. But Hmm. that being said, even though we are not a large company to their size compared Hmm. to their size, Hmm. we are been able to execute significant projects with Hmm. very good Hmm. accuracy, Hmm. and it will take a little bit of engineering skills and know-how Hmm. Hmm. and tricks and techniques for them to get there, which Correct. gives us a first mover advantage at least. Correct, correct, correct. Yes, So just for the investors, there is a JV happened in their industry where a leading steel supplier did a JV with a leading PB player for the heavy structures, and that those companies are of much larger size to them, and they are entering into the overall heavy steel structure. But they have been operating in this for like 10 years, and they have a huge track record of doing the projects with the extreme precision. So that speaks of the volume. I think right, आपकी जो फैसिलिटी है गुजरात एंड महाराष्ट्र में है, but your revenues geographically are splitted all across the India, right? So right, I understand there are very few players in this whole industry which are able to do these kind of projects, because building a 40-ton steel structure at Gujarat and then transporting it to a south or a west kind of even east also you have operated into. So that is very rare. It generally don't happen in the industry because everybody looks for a geographical closer to proximity. But right. आपकी इंडस्ट्री में इस तरीके से देखा गया है कि you have been able to do all across India. Yeah, so over there, I would want to say that there are a lot of unorganized players, Okay. but again, like I said, the kind of over dimension Hmm. and the overweight components that we are able to handle is not something that can be easily Hmm. fabricated or handled by everybody. Okay. And also the volumes at which we operate, we Hmm. are a significant contributor usually if we Hmm. join a project. Hmm. So when it comes to timelines, clients are ready to take that, logistics or other small overheads on their part, so Hmm. that projects are executed well in time with the quality requirements that they have. Hmm. Okay, thanks. Uh, I think the IPO you are bringing up with an issue. So I Mm. have just seen your valuations are somewhere close to 15 to 17 ratio, P ratio. So what is an idea behind keeping the valuations lower than, because your listed players or peers operate into this industry trades at much higher valuations. So what, just wanted to understand a thought process from an No, I think entrepreneur I think mindset. shareholders are our partners, and we should always leave something on the table for them so that they are part of our success journey. Okay, that's a very rare kind of a situation in current markets where everything is trading at such steep valuations. So I think that is what we all have came across. Okay, so quick recap of Carbon Steel, what exactly they do and what are their key investment thesis. Okay, so the company has a proven track record of more than 19 years in this industry. Okay, their revenue has grown consistently by 32%, while EBITDA has grown 50% between FY 23 to 25. उनकी ऑर्डर बुक जो है करीबन 64 करोड़ से ग्रो होकर आज 330 करोड़ की हो चुकी है. ओके, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी का इंजीनियरिंग प्रिसीजन, जो कि जापानीज ने इन्हें ट्रेन किया है. वहीं पे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये आरडीएसओ अप्रूव्ड कंपनी है. ओके, सो दे आर नाउ feasible for the railway orders as well. Okay, one of the most important moat of this industry is it is a very high precision industry. That's why the company gets 96% of the repeat orders. Okay, so that is all about the company.
Going forward, carbon steel will derive its growth from the capacity expansion which they are doing. They are spending somewhere around 12 crores for the capacity expansion, जहाँ पे उनकी capacity 32,000 metric ton से 48,000 metric ton चली जाएगी, okay, which will be live by Feb 25. Their key focus will be going forward for the railways orders. Okay, that is the most important thing. So these two are the two growth triggers for the company. While the company derives revenue from the versatile nature of the industry and versatile geography, and being a very one of the few players who operates into this. So कार्बन स्टील का IPO 4th September को एंकर बुक है. 8th September से इशू इज गेटिंग ओपन for till the 10th September. The price band is around 151 to 159. Issue size is overall 59 crores का है. दो issue objects हैं इनके, which is one is 12 crores का जो they are doing capacity expansion. Then there is a small debt repayment. Okay, so the post issue market cap at the upper price band will be 22.4 crores. So that's all about carbon steel. For explaining everything in detail. Uh, I wish you luck for your IPO journey, and that's all about, I think. Thank you. Thank Thank you you, so, Beat the so much, Street, sir. for having us. Thank you, Thank you sir. very Thank you. much.